So this question is very important towards your any competitive exams. Okay, a particle moving along the x-axis travels first 3 meter distance with velocity 3 meter per second, and the second 3 meter distance with velocity 6 meter per second. The average speed of the particle is how much? Okay, we have to calculate the average speed. The first case, the distance is given and velocity is given. Second case also distance and velocity is given. Now we have to calculate the average speed. We know that the average speed form is average speed equal to average velocity. We have to find the average velocity. Okay, average speed is the total distance by total time taken. Total time. Okay, but we have to calculate the average velocity. The average velocity is equal to total displacement by total time. Okay, first case 1. Case 1 is velocity distance is given, d1 is equal to 3 meter and your velocity v1 is equal to 3 meter per second. Now we have to calculate the time. So time t1 is equal to t1 is equal distance by velocity. So distance is 3, velocity also 3, so it's equal to 1 second. Time is equal to 1 second. Case 2, the distance is also, case 2 distance d2 is equal to 3 meter and v2 is equal to 6 meter per second. Now time t2 is equal to distance by velocity, displacement by velocity, so it's equal to 3 divided by 6 is equal to 0.5 second. Now total displacement and total time. Total displacement is d1 plus d2 is equal to 3 plus 3 is equal to 6 meter. Okay, and total time, your total time is equal to, that is t is equal to t1 plus t2 is equal to 1 plus 0.5 is equal to 1.5 second. We have to calculate the average speed. Average velocity equal to total displacement by total time. Total time taken. Okay, total displacement, total time taken. Equal total distance is equal to how much? 6. Total time is equal to 1.5. So 6 divided by 15 by 10 is equal to 60 by 15. So it's equal to 4. So that is 4 meter per second. Therefore, average velocity is 4.0 meter per second. So which one is correct option? Your correct option is option A is correct. Okay, पिला मैंने देखी पार्छ केते इम्पोर्टेंस माने इजी क्वेश्चन देख किसी ना क्वेश्चन बुझिले तुम इजिली सॉल्व करि पारिबो. कोन अछि ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, गोटे पार्टिकल एक्स एक्सिस रे मूव करछंती. प्रथम डिस्टेंस केते 3 मीटर दे देछि, तांकर स्पीड केते 3 मीटर पर सेकंड देला. सेकंड रो जो डिस्टेंस दे देछि केते 3 मीटर, आ स्पीड केते दे देला वेलोसिटी देछि 6 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी पचारछि, किंतु एवरेज वेलोसिटी फार्मूला होछि कोन? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन. ये फार्मूला मन रखले तुम इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारिबो. ठीक अच्छे. तो केस 1 लिखला d1 इक्वल 3 मीटर देछि, v1 इक्वल टू 3 मीटर देले. एबे टाइम बाहर करबा, t1 इक्वल टू केते हम टाइम बाहर करे फार्मूला कोन पिले? टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस बाय स्पीड ये जो टाइम वेलोसिटी देती सेमती लगे टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी यही फॉर्मूला यूज करी सॉल्व कली किसी ना प्रॉब्लम देख बहुत इजी केस 1 देदेला केस 2 वैल्यू तार टोटाल डिस्प्लेसमेंट बाहर करदे ऐड करदेली टोटाल टाइम दुटा को ऐड कले एवरेज स्पीड एमती फॉर्मूला बाहर कले 4 सेकेंड है ना नहीं क्वेश्चन बहुत इजी अच्छी ना नहीं पे भिडियो जब भल लगुच लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर जमार भूल ना थैंक यू फॉर योर वाचिंग थैंक यू।